वेलकम टू एसओएमबी। आज के बिग पिक्चर डिबेट का टॉपिक है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। दीज वर द पैनलिस्ट ऑफ आवर डिस्कशन। सो आइए देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट जब भी कोई दो लोग हु आर प्रोफेसिंग टू डिफरेंट रिलीजन एंड जब उनको शादी करनी है, सो देर इज अ केस ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन विच इज टेकिंग प्लेस। So based on this, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है कि that it is really disturbing to know that one has to change one's faith just for the sake of matrimony, जबकि हमारे पास ऑलरेडी एक स्पेशल एक्ट है, दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954, जिसके तहत दो लोग जो डिफरेंट रिलीजन प्रोफेस कर रहे हैं कैन गेट मैरिड अंडर दिस एक्ट, which is one of the earliest attempt. I mean, this SMA Act of 1954 is one of the earliest attempt towards the Uniform Civil Code. So now let us see what is Special Marriage Act 1954, how it got originated, and what are those provisions, its provisions. SMA Act of 1954 is an act of Parliament of India which is enacted to provide a special form of marriage hoga for the people of India and all Indian national and foreign countries, irrespective unka religion kya hai, unka faith kya hai, provided there are certain conditions which are to be fulfilled. Certain provisions are there जिसके जिसको fulfill होना बहुत जरूरी है under this act. ये act actually originate हुआ है from a piece of legislation which was proposed in the 19th century. That act was named as Act 3 of 1872. इसके कुछ प्रोविजंस ही एसएमए एक्ट से सिमिलर हैं, नॉट एग्जैक्टली। दिस act of the Act 3 of 1872 permitted any dissenters, that is, any party, to marry whomever they want to under a new civil marriage law, even if they profess two different religions. But it included some extremely problematic elements. Like, इसमें ये था कि अगर कोई दो लोग जिनके दो डिफरेंट रिलीजन्स हैं प्रोफेस कर रहे हैं एंड दे वांट टू गेट मैरिड, तो बिफोर गेटिंग मैरिड दे नीड टू रिनंसिएट देयर रिलीजन, renunciation of a religion by anyone getting married under it, and there was no such provisions for the dissolution of marriage. मैरिज को एंड करने का कोई प्रोविजन नहीं था. And that is how SMA Act, because of such issues, SMA Act has replaced this Act 3 of 1872. The main objective जो है SMA Act of 1954 का is to address the interreligious marriages and to establish marriage as a secular institution, not as a religious institution, which lacking all, जिसमें कोई religious formalities नहीं होती है, कोई rituals नहीं होते हैं. We just need a registration to be done. Marriages performed under SMA, they are not governed by the personal laws. Okay. So now let us see कि provisions क्या है SMA Act, SMA of 1954 के. Any two individual जिनको शादी करनी है, they have to attain a legal age, that is 18 years for the girls and 21 साल लड़कों के लिए. Just and they have to give that notice to the marriage registrar of the district जहाँ पे उनको शादी करनी है, and declare करना है कि declare करना है their intent to get married. Each party जो involve होंगे, I mean those two persons should not have any other subsisting valid marriage. The resulting marriage should be monogamous for both the parties. Also, जो भी parties हैं, they should not suffer any mental disorder. मतलब वो capable होने चाहिए to give the consent for the marriage. That is, there should not be any mental incapability. Also, their relationship must not be prohibited as defined under the Act. Actually, SMA Act 1954 के under there has been some provisions जिनके कुछ क्राइटेरियाज हैं जिससे कि कुछ रिलेशनशिप्स को प्रोहिबिट किया है. सो जो इनका रिलेशनशिप होगा, जो दो पार्टीज जो शादी करना चाहते हैं उनका जो रिलेशनशिप होगा, वो प्रोविजंस must not be prohibited under the such act. उनके provisions इसके साथ नहीं होने चाहिए. Provisions under the act require parties of an intended marriage to publish their private details. उनको अपने private details बताने पड़ेंगे for public scrutiny 30 days prior to the intended marriage.
एटलीस्ट वन पार्टी, उनमें से एक लोग, शुड रिसाइड फॉर 30 days इन दैट पर्टिकुलर मैरिज रजिस्ट्रार्स डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे उन लोगों ने एप्लीकेशन दिया है। ये जो एक्ट है, इट इज एप्लीकेबल टू द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड इवन एक्सटेंड टू द स्पाउसेस हु आर बोथ इंडियन नेशनल लिविंग अब्रॉड। इस एक्ट में प्रोविजन दिया है डिवोर्स का भी, एज वेल डिवोर्स का भी, जो कि एक्ट 3 ऑफ 1872 में नहीं था। There is no provision, but there is no provision for the punishment in this act, and this is a major flaw. Issues क्या है religious conversions के? हमने देखी there has been lot of cases of religious conversions just for the sake of matrimony. So ये हो क्यों रहे हैं? And इस अगर ये हो भी रहा है तो इसके क्या repercussions होंगे? इशू क्या है? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि एसएमए एक्ट है भी कुछ। So people are not aware of SMA and they do not know the significance of this act. So the issue that is why the issue of conversion on the name has been increased in India and ये सिर्फ एक matrimonial issue नहीं है. It is beyond such social issues as well. Okay, what can be the effect of religious conversions? Some people believe that कि conversion तो एक personal choice है, personal decision है, it should revolve around an individuals. But there has been various judgments earlier where the Supreme Court ने specifically recognized किया है that conversions can create law and order issues अगर वो free will पे नहीं हो रहे हैं, because at the end of the day जो है, it affects the central question of demographics. कोई रिलीजन हुआ या सोसाइटी हुई या कम्युनिटी हुई, वो कंपोज तो होती है इंडिविजुअल्स की ही। अगर एक एक करते करते इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से निकलते रहेंगे, so that particular community gradually will not survive. This is what the concern is. That is, one individual after other. If one individual after other starts petering out of that particular community, then nothing survives out of that particular community. We can take an example of Parsi community का केस देख सकते हैं। अभी देखिए, at one point of time they were least bothered to preserve their own community. So उसके कारण right now they are barely left with 60,000 population, and now they are thinking about the anti-conversions laws and all. And हम इसका वेट नहीं, हम हर कम्युनिटी का इस स्टेप तक वेट नहीं कर सकते कि सबका पॉपुलेशन कम होता जाए एंड देन दे टेक ऑल दी स्ट्रिंजेंट लॉज। देयर इज अ नेसेसिटी कि अभी ही हम एक्ट करें अकॉर्डिंगली। सो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? देखिए, जो भी इंटेंशंस हुए हैं बिहाइंड द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन, लेट इट बी रिलेटेड टू एंटी कन्वर्जन लॉज जो भी हैं, एंटी कन्वर्जन लॉ से रिलेटेड, एसएमए एक्ट से रिलेटेड जो भी लेजिस्लेशंस प्रपोज्ड हुए हैं, दे सीम्स टू बी वेल प्लेस्ड. द आइडिया शुड बी टू एड्रेस द रूट कॉज इन अ मोर panoramic fashion. A law that deals with the fraudulent conversions must be in place. Conversions जो हो रहे हैं from one religion to another religion, as long as it is fraudulent, is supposed to be looked upon. We have a very strong laws, as I've said it, बहुत strong laws हैं, but it has to be implemented in a proper manner and stringently. मैरिज एंड कन्वर्जन ये दो डिफरेंट इश्यूज हैं, इनको इंटरलिंक नहीं करना चाहिए। कन्वर्जन अगर करना है, इट शुड बी अ पर्सनल डिसीजन, पर्सनल चॉइस, एंड इफ टू पीपल प्रोफेसिंग डिफरेंट रिलीजन दे कैन गेट मैरिड अंडर एसएमए एक्ट। सो देयर इज अ नीड कि लोगों को अवेयर किया जाए कि देयर इज रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ द एसएमए एक्ट। Also, religion and personal matters are to be distinguished and taken care of personally, separately. Personal matters like marriage हुआ, succession हुआ, divorce हुआ, adoption हुआ, they can be solved by implementing uniform civil code in the legislation to some extent. There has been few stringent provisions in the SMA's procedural challenge and the procedural challenges and जो हैं, it should be addressed. So these are the measures which we can take to avoid such religious conversions just for the sake of marriage. So let us see what is the conclusion. Religion today has gone well beyond just faith in the Almighty, and that is something we should seriously look upon.
स्पेशल मैरिज एक्ट जो है, it addressed the issue of intercaste and interreligious marriage, but it does not look upon the punishment for the forced conversions. So this is the major need of an hour. The act is over 60 years old, 60 years old. That is 1954 में बना था. काफी साल हो गए इसको बने हुए. And there is a need to look upon, and there should be some flexibility given in the act regarding the punishments for the forced conversions. The time is right to have a wider consultation with all the stakeholders and give a thought to bring the uniform civil code. So that's all for today. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, so please like the video, comment on it, do subscribe to the channel. Also आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, that is @SOMP guidance for further details. Thank you.